Hello students, welcome to my YouTube channel Arihan Tuition Center. Students, अकाउंटेंसी के एग्जाम में एक 3 मार्कर क्वेश्चन आता है जिसमें कुछ आइटम्स गिवन होती हैं। आपको उन आइटम्स में से उनके हेडिंग और सब हेडिंग्स लिखने के लिए जनरली पेपर में पूछा जाता है। तो मैंने इस वीडियो में थोड़ा सा सिंप्लीफाइड करके आपको ये चीज समझाने की कोशिश की है। अगर हम हेडिंग्स की बात करते हैं, इक्विटी एंड लायबिलिटीज में हमारे पास 4 हेडिंग्स है। शेयर होल्डर्स फंड्स, शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, नॉन करंट लायबिलिटीज एंड करंट लायबिलिटीज। एंड एसेट साइड में हमारे पास 2 हेडिंग्स है, नॉन करंट एसेट्स एंड करंट एसेट्स। मींस अगर हेडिंग्स की बात की जाए तो इन टोटल हमारे पास 6 हेडिंग्स है और उन 6 हेडिंग्स में से ही कोई ना कोई हेडिंग आपके पेपर में आपके हेडिंग सेक्शन के अंदर आंसर होगा। तो यू हैव टू लर्न ऑल दीज हेडिंग्स नेम्स। ओके, देन फर्दर क्लासिफिकेशन करते हैं। शेयर होल्डर्स फंड्स के साथ हम स्टार्ट करते हैं। शेयर होल्डर्स फंड्स की जो सब हेडिंग्स है उसमें एक है शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल कोई भी हो सकती है, ऑथराइज्ड, इशूड, सब्सक्राइब्ड, एंड ये इक्विटी एंड प्रेफरेंस शेयर्स दोनों के लिए अप्लाई होता है। देन सेकंड आइटम जो है वो रिजर्व एंड सरप्लस है। कैपिटल रिजर्व, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, सिक्योरिटीज प्रीमियम, डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व, रिवैल्यूएशन रिजर्व और कोई भी रिजर्व, वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, कंटिजेंसी रिजर्व। दूसरे वर्ड्स में कह सकते हैं जिसके भी पीछे रिजर्व वर्ड लगा हो। फंड, वर्कमैन कॉम्पनसेशन फंड, लाइक दिस, एक्सेप्ट ईपीएफ, एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड को हम यहाँ पे काउंट नहीं करते। तो अगर इनमें से कोई भी आइटम पेपर में गिवन है आपको, तो उसका जो हेडिंग है वो शेयर होल्डर्स फंड है, लेकिन उसका सब हेडिंग जो है वो रिजर्व एंड सरप्लस होगा। देन शेयर ऑप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट, ये आपको एक लर्न करना होगा कि हेडिंग उसका क्या है, शेयर होल्डर्स फंड, एंड सब हेडिंग रिजर्व एंड सरप्लस। उसके बाद अगर पी एंड एल का क्रेडिट बैलेंस आपको क्वेश्चन में दिया है, दैट मीन्स हेडिंग इज शेयर होल्डर फंड एंड सब हेडिंग इज रिजर्व एंड सरप्लस। एंड इन केस डेबिट बैलेंस, नेगेटिव बैलेंस आपको अगर पेपर में गिवन है, तो हेडिंग तो उसका शेयर होल्डर्स फंड ही है और सब हेडिंग उसका रिजर्व एंड सरप्लस ही है, बट यू विल राइट शोन एज अ नेगेटिव फिगर अंडर द हेड सब हेडिंग रिजर्व एंड सरप्लस। एंड एक आता है इसमें मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट्स, जिसके अंडर कुछ भी नहीं है। तो बेसिकली यहां से आने के चांसेस रिजर्व एंड सरप्लस वाले पॉइंट के ज्यादा होते हैं। नेक्स्ट, शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, इसके अंडर कुछ भी नहीं होता है। नाउ द थर्ड इज नॉन करंट लायबिलिटीज। अगर मैं नॉन करंट लायबिलिटीज की सब हेडिंग्स की बात करूं तो हमारे पास 4 हैं। आप इसको इस शॉर्टकट से याद कर सकते हैं, डॉल, DOLL, डी फॉर डेफर्ड रेवेन्यू, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटीज नेट, O for other long-term liabilities, L for long-term borrowings, and L for long-term provisions. But उसका sequence ये है, but you can learn in this shortcut way. Now, if we talk about the long-term borrowings basically यहाँ पे non-current की अगर हम बात कर रहे हैं, period after 1 year they are talking about anything. तो डिबेंचर्स हैं, बॉन्ड्स हैं, टर्म लोन्स हैं, चाहे आपने बैंक से लिए, किसी पार्टी से लिए, पब्लिक डिपॉजिट्स, अदर्स लोन्स एंड एडवांसेस, इन सब के लिए अगर आपको इनमें से कोई भी चीज पेपर में दी है, इसका हेडिंग जाएगा नॉन करंट लायबिलिटी, सब हेडिंग जाएगा लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। डेफर्ड टैक्स लायबिलिटीज के अंडर आपको ऐसा कुछ नहीं है, इफ इट इज गिवन इन द पेपर देन इट्स हेडिंग इज नॉन करंट लायबिलिटीज, दैट्स इट। देन other long term liabilities, it includes all the liabilities which are to be paid after 1 year, or you can say after 12 months. Okay, then long term provisions, liabilities against which will arise after 12 months, provision for gratuity, provision for earned leaves, these are counted as a long term provisions. Now current liabilities की 4 headings है जिसको आप इस तरीके से लर्न कर सकते हैं। टॉस, T for trade payables, O for other current liabilities, S for short term borrowings, S for short term provisions। लेकिन इसका सीक्वेंस है, शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, बैंक ओवरड्राफ्ट, कैश क्रेडिट, लोन रीपेबल ऑन डिमांड, current maturity of any long term debt and deposits. Basically these are concerned that these have to be paid within the time span of 12 months or 1 year, you can say. Then trade payables, trade payables के अंदर 2 चीजें आती हैं, sundry creditors and bills payable. If suppose sundry creditors is given in the question or bills payable in the given the question, heading will be the current liability, subheading will be the trade payables. The next is other current liabilities.
interest accrued and due on borrowings, interest accrued but not due on borrowings, income received in advance, unpaid dividend, calls in advance, outstanding expenses, unearned income. So many things are there. For this, the heading will be current liability and subheading will be the other current liability. Then next in this category is short-term provisions. Provisions against liabilities which are payable in 12 months. मतलब वो provisions जो liabilities में convert हो सकते हैं within the time span of 12 months. Like provision for employees benefits, provision for tax, provision for expenses. Students, if we talk about the asset side, non-current assets and current assets will be the main headings. Now, in non-current asset, first subheading will be property, plant and equipment and intangible assets. उसका further classification है. Like if any tangible asset is given, land and building, machinery, fixtures, furniture, computer, vehicle, office, anything which have a physical existence. In that case, heading will be non-current asset, subheading will be property, plant and equipment and intangible assets, and then further property, plant and equipment. In case of intangible assets which do not have any physical existence, anything, goodwill, copyright, brand, computer software, mining rights, etc., anything given in the paper. For that, heading will be non-current assets, subheading will be property, plant and equipment and intangible assets, further classification intangible assets. Then if capital work in progress is given in the question, that means the any tangible asset is under the construction. For example, building under construction is given in the paper. In that case, heading will be non-current asset, subheading will be property, plant and equipment and intangible asset. Further classification will be capital work in progress. In the same way, intangible assets under development, any patent, property right can also be given to you. Then in that case, heading will be non-current asset, subheading will be property, plant and equipment and intangible assets, and further classification will be intangible assets. After that, if non-current investments is given to you, these are held for the long time, not for the purpose of free selling. Investment in property, equity share, preference share, government securities, debenture, bonds, mutual funds, etc. If any of the item is given in the paper, heading will be non-current assets, subheading will be non-current investments. Okay. Then deferred tax assets. If it is given in the paper, heading will be non-current assets. That's it. Long-term loans and advances. If any of the category of long-term loans and advances are given in the paper, heading will be non-current asset. Subheading will be long-term loans and advances. And last one is other non-current assets. Heading will be non-current assets, subheading will be other non-current assets. For example, deposit with electricity supply company. Now, current assets. To learn the current asset, you can learn this shortcut. Let's go. For all the subheadings of current assets, T stands for trade receivable, I stands for inventory, S stands for short-term loans and advances. C stands for current investment. C stands for cash and cash equivalents. O stands for other current assets. Now, this is the shortcut, but the sequence is this: current investment which is to be converted into cash in 12 months. Any type of investment like equity share, preference share, government security, debenture, bonds. नॉन करंट इन्वेस्टमेंट में ये था कि वो 12 महीने से ज्यादा में उसको कैश में कन्वर्ट हो रहा था. करंट इन्वेस्टमेंट में वो है कि विद इन द टाइम स्पैन ऑफ 12 मंथ्स कन्वर्ट हो रहा है. Okay, if any of the life, for example, investment in equity share is given to you and it is said that it will be converted into cash within 9 months or 10 months, then heading will be current asset, subheading will be current investment. Now, inventory. Any of the item like raw material, work in progress, finished goods, stock in trade, stores and spares, loose tool given in the paper, then heading will be current assets, subheading will be inventory. इसको लर्न करने का तरीका आप इसको आसानी से कर सकते हैं. लाइक आप कुछ भी खरीद रहे, दैट इज रॉ मटेरियल, आपने उस पर काम शुरू किया, इट इज वर्क इन प्रोग्रेस. देन गुड्स रेडी हो गए तो फिनिश्ड गुड्स. देन स्टॉक में रखा, स्टॉक इन ट्रेड, जस्ट फॉर द लर्निंग पर्पस कि आपको किसी तरीके से ध्यान रहे. देन आपने उसको स्टोर्स में रखा, स्टोर्स एंड स्पेयर्स. एंड द लास्ट पार्ट यू विल हैव टू लर्न लूज टूल्स. इन टोटल वी हैव द 6 items. Okay, any of the heading
any of the item is given, heading will be current asset, subheading will be inventory, और inventory से generally paper में कोई ना कोई point पूछ लेते हैं। Next is trade receivable, इसके अंदर दो items आते हैं, डेटर एंड ट्रेड रिसीवेबल्स, जो विद इन 12 मंथ्स अगर कैश में कन्वर्ट हो रहा है तो वो करंट एसेट का पार्ट होता है। तो डेटर्स, इफ इट इज गिवन इन द पेपर, करंट एसेट विल बी हेडिंग and trade receivable will be subheading, and same applies to the trade receivable as well. Next is cash and cash equivalents, balance with the bank, check, draft in hand, cash in hand, या आप बहुत आसानी से कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का आपका आइडेंटिफिकेशन हो जाता है। तो हेडिंग विल बी करंट एसेट, सब हेडिंग विल बी cash and cash equivalent. Short-term loans and advances, any type of loan and advances which is to be realized within the period of 12 months. Within the period of 12 months, then it is heading will be current asset, subheading will be short-term loan and advances. On the contrary, if it is beyond the 12 months, heading will be non-current asset and subheading will be long term loans and advances and other current assets. ये भी important है क्योंकि इसमें से भी कोई ना कोई आइटम पेपर में मिल जाती है, prepaid expenses, accrued income, dividend receivables और advance taxes. If any of these items are given in the paper, heading will be current asset, subheading will be other current assets. I have tried to simplify these some of the points, then you should learn at least these points you can learn and you will be easily able to get 3 marks in the paper. Okay, thank you students.